Metabolism of drug. It is one of the kinetic process. So we have seen in the very first, we have seen in the initial part of your pharmacology, the process known as the kinetics. So in the kinetics, you have absorption, distribution, metabolism, and elimination. Okay. ADME को क्या बोलते हैं अपन kinetics ADME. So in that there is one term known as the metabolism. So it is also known as, remember, metabolism is also known as a biotransformation, or it is sometimes also known as detoxification. Metabolism is also known as a biotransformation or detoxification. So metabolism को क्या बोलेंगे? Biotransformation. What is meant by biotransformation? So it is nothing but the transformation of drug in the biological system. Transformation of drug in the biological system. Transformation of drug in the biological system. With transformation of drug क्या होता है? I have already told you. For the absorption you need a lipid soluble drug. Absorption के लिए आपको lipid soluble drug चाहिए, and for elimination you need a water soluble drug. तो absorption के लिए आपको अगर lipid soluble drug चाहिए, और elimination के लिए आपको अगर water soluble drug, यहाँ पे absorption के लिए क्या है? lipid soluble drug, right? And elimination के लिए क्या चाहिए आपको? Water soluble drug. So you are taking lipid soluble drug and you are eliminating water soluble drug, right? Who will convert that lipid soluble drug into water soluble drug? So there is a role of metabolism. So conversion of lipid soluble drug into water soluble drug, that is a metabolism in very simple language. So biotransformation means transformation of drug into biological system, that is a conversion of drug into one form into another form. Conversion of drug into one form into another form, or conversion of active drug into inactive drug. For the absorption you need a lipid soluble molecule, and for elimination you need a water soluble molecule. And conversion of lipid soluble molecule into water soluble molecule is known as a metabolism. It is the function of metabolism. एक बार क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था? So what is the main role of biotransformation? So that is nothing but the conversion of lipid soluble molecule into water soluble molecule. Or what is the main role of metabolism? To convert lipid soluble molecule into water soluble molecule. आपको याद ही रखना है, क्योंकि lipid soluble molecule absorb जल्दी होता है, water soluble molecule eliminate जल्दी होता है. So transformation of drug into biological system, or conversion of drug into one form into conversion of drug from one form to another form, which may active or inactive. तो अभी ये conversion active भी हो सकता है, कभी-कभी active metabolite बनते हैं ना, और कभी-कभी inactive. Most of the time it is inactive, but sometimes some drug will be converted into active metal. So that is nothing but the metabolism. Biotransformation is also known as a metabolism, and again it is also known as a detoxification. So what is the main aim of biotransformation? The main aim of biotransformation is nothing but the to make a drug water soluble. क्या है? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बोला है. So what is the main aim of biotransformation? The main aim of biotransformation is nothing but the to make a drug वाटर सोल्यूबल. सो जैसे आपने लिपिड सोल्यूबल ड्रग ले लिया तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा वाटर सोल्यूबल ड्रग में. दैट इज द मेन एम ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन, टू कन्वर्ट वाटर सोल्यूबल ड्रग, टू कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल ड्रग इनटू वाटर सोल्यूबल. सो मेन एम ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन इज टू मेक द ड्रग वाटर सोल्यूबल, राइट? द मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ बॉडी इज नथिंग बट द लिवर. आपको मालूम है मेटाबॉलिज्म बॉडी का किस में होता है? लिवर में. So metabolic factory of body is nothing but the liver. So which metabolizes the drug? So liver has the highest capacity to metabolize the drug. आपको एक क्वेश्चन आ चुका है, which of the following organ has the highest capacity to metabolize the drug? और उसमें ऑप्शन में देंगे liver, kidney, lungs, okay, skin. So liver has the highest capacity to metabolize the drug. So which metabolize the drug? और xenobiotic. Xenobiotic मतलब क्या है? Xenobiotic मतलब any foreign chemical. So every drug is a foreign chemical to our body. हर एक ड्रग जो क्या है xenobiotic है. So metabolic factory of liver body is liver and it metabolizes the. So मेटाबॉलिज्म के लिए दो टाइप के एंजाइम लगता है, एक तो माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड एक होता है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स. तो माइक्रोसोमल, so for the metabolism you need a two type of enzyme, okay? Before that we will see it. So metabolism is a process of conversion of unionized lipid soluble drug into ionized water soluble drug, and it is also known as a detoxification process. After the biotransformation, drug will be water soluble product.
कि आफ्टर द मेटाबॉलिज्म को वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एब्सॉर्प्शन के लिए आपको लिपिड सोल्यूबल ड्रग चाहिए होता है, और रिमूवल के लिए, ठीक है, आपने जो भी ड्रग ले लिया उसको बाहर निकलना पड़ेगा ना बॉडी से, तो वो अंदर ही उसका कार्यक्रम चालू करता है। सो बाहर निकलने के लिए बॉडी क्या करती है, मेटाबॉलिज्म करती है। मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन or detoxification process. After metabolism, you will get a water soluble product, or it is a conversion of unionized lipid soluble molecule into ionized water soluble. For the metabolism, you need a enzymes. Metabolism कौन मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, लिवर करेगा, लेकिन किसके किसकी हेल्प से, liver will metabolize the drug with the help of enzymes. Now there are two enzymes. First one is a microsomal enzyme. Okay, microsomal enzyme, and second one is a non-microsomal. Microsomal enzyme means what? So microsomal enzyme means these are the enzymes which are present in the microsomes of liver. liver के सेल्स जो होते हैं उसमें माइक्रोसोम जो पार्ट होता है उसमें जो एंजाइम्स है उसको बोलेंगे माइक्रोसोमल एंजाइम. So microsomal enzymes, they are these are the enzymes which are present in the microsomes of liver cell, and mostly they are located on the smooth endoplasmic reticulum. सेल में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ endoplasmic reticulum. So microsomal enzymes, they are known as the enzymes of liver origin, and they are present in the liver cell. liver के सेल में जो होता है माइक्रोसोम, और उसमें ये एंजाइम्स आएंगे उसको बोलेंगे माइक्रोसोमल एंजाइम, एंड मोस्टली दे आर प्रेजेंट ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दे आर नोन एज CYP साइटोक्रोम. उसके कौन सा एंजाइम है, CYP एंजाइम, साइटोक्रोम P450, इसको बोलेंगे साइटोक्रोम P450, ठीक है. नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम मतलब क्या है, एंजाइम ऑफ अदर ओरिजिन, एंजाइम ऑफ अदर ओरिजिन. अदर ओरिजिन कौन सा है, so some drug will be metabolized in the GIT, उसके जो एंजाइम्स है वो. drug will be also metabolized by kidney, उसके वहाँ पे जो एंजाइम्स है वो. some drug will be metabolized by liver, lungs, वहाँ पे जो एंजाइम्स है वो. they are known as a non microsomal. Okay, so microsomal enzymes means enzymes of liver origin, non microsomal enzymes means enzymes of other organs, right? so now drug metabolism normally result in, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में क्या होता है ड्रग का, ठीक है. सर आपने आपके पागल हो गया, आपने पहले ही बोल दिया ना कि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड मिलता है, लेकिन वो तो एक लाइन बोला ना मैंने, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज. सो आफ्टर द ड्रग मेटाबॉलिज्म व्हाट आर द डिफरेंट आउटकम्स, व्हाट आर द डिफरेंट आउटकम्स, दीज आर द डिफरेंट आउटकम्स. सो एक्टिव ड्रग विल बी इनएक्टिवेटेड. ओके, जो एक्टिव ड्रग आपने ले लिया है उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा, वो इनएक्टिवेशन. सो इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग. ओके, पहला क्या आउटकम है, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग. सो एक्टिव ड्रग ले लिया, उसका मेटाबॉलिज्म हो गया, रिमूवल हो गया, सो इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग. सेकंड आउटकम इज जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबॉलाइट. जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबॉलाइट, जो एक्टिव ड्रग है आपका ऑलरेडी, उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में और बॉडी में दूसरा ड्रग बनता है जो एक्टिव है. सो जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबॉलाइट. ओके, नाउ जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबॉलाइट हैविंग सेम एक्शन एज दैट ऑफ द ओरिजिनल ड्रग, और जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबॉलाइट having another action. So generation of active metabolite having another action. ये तो हो गए तीन. अभी फोर्थ, occasionally there is a activation of pharmacologically inactive drug. जो prodrugs होते हैं, prodrugs, these are the drugs which are pharmacologically inactive as such. ये prodrugs जो है ये inactive होते हैं as such. For example levodopa. Levodopa is the example. Okay, so prodrugs are inactive drugs which are activated in the body. So prodrugs are inactive as such, and after metabolism they are converted into active drug. So occasionally activation of pharmacologically inactive drug into active drug. So in case of prodrugs, ये इसके एग्जांपल बाद में देख लेंगे बहुत सारे. नाउ नेक्स्ट आउटकम क्या होगा, नेक्स्ट आउटकम है आपका टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ ड्रग. टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ, पहला आउटकम क्या था, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग. मोस्ट ऑफ द इनएक्टिवेशन होता है, जो ड्रग एक्टिव दिया है उसको कभी कभी एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनता है आपका, ठीक है. जैसे मैंने बोला है कि कोडिन नहीं, कोडिन फॉस्फेट. कब अभी मेरे को खांसी है तो कोडिन फॉस्फेट का कब सिर्फ ले लिया मैंने. सो कोडिन फॉस्फेट का 10 मिलीग्राम ड्रग, 10 मिलीग्राम ऑफ कोडिन फॉस्फेट, 10 mg ऑफ कोडिन फॉस्फेट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बॉडी इनटू 1 mg ऑफ मॉर्फिन. 10 mg का कन्वर्जन होगा 1 mg में. मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन इज आल्सो एक्टिव ड्रग. 1 mg मॉर्फिन,
10 मिलीग्राम का कन्वर्जन होता है 1 mg मॉर्फिन। मैंने ले लिया, क्या लिया मैंने, कोडिन ले लिया, कोडिन फॉस्फेट ड्रग है वो खांसी का, ठीक है, एंटीडाइसोटिक। So after metabolism, it is converted to one active metabolite known as morphine. Okay. So generation of active metabolite. Generation of active metabolite having same action और generation of active metabolite having another action. कभी कभी क्या है, सेम एक्शन का मेटाबोलाइट बनता है, कभी कभी जो मेटाबोलाइट बना है उसको दूसरी ही एक्शन होती है, जैसे रिवर्सिबल एक्शन. नाउ ऑकेजनली एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग इन केस ऑफ प्रोड्रग्स. एंड थर्ड, रेयरली टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन, मतलब जो ऑलरेडी टॉक्सिक ड्रग है या फिर जो लेस टॉक्सिक ड्रग है. फॉर एग्जांपल जैसे डीडीटी लेंगे, एक ड्रग होता है आपका, ड्रग तो नहीं बोलेंगे उसको, पेस्टिसाइड होता है. सो पेस्टिसाइड इज देयर, सो दैट पेस्टिसाइड इज ऑलरेडी टॉक्सिक. वो ऐसे भी टॉक्सिक है, लेकिन बॉडी में जाने के बाद में उसका मेटाबॉलिज्म होता है और जो मेटाबोलाइट बनता है वो उससे भी ज्यादा टॉक्सिक है, मतलब दुष्काल तेराओमैन है ना. सो टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन मीन्स व्हाट, जो ऑलरेडी टॉक्सिक ड्रग है, कम टॉक्सिक है, लेकिन उसका बॉडी में जाने के बाद में मेटाबॉलिज्म होगा और ज़्यादा टॉक्सिक मेटाबोलाइट बने, तो उसको बोलते हैं रियरली टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन. विल सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस इन अपकमिंग. सो इन अ वेरी फर्स्ट लेक्चर वी हैव सीन दिस. व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट ड्रग? सॉफ्ट ड्रग्स आर नथिंग बट द ड्रग्स व्हिच आर इजी टू मेटाबोलाइज, उसके एग्जांपल भी देखे थे अपन ने. नाउ हार्ड ड्रग्स मींस व्हाट, दीस आर द ड्रग व्हिच रेजिस्ट द मेटाबॉलिज्म. सॉफ्ट ड्रग किसको बोलेंगे, दोज ड्रग्स व्हिच आर इजी टू मेटाबोलाइज. हार्ड ड्रग किसको बोलेंगे, हार्ड ड्रग. सो हार्ड ड्रग्स आर नॉट इजी टू मेटाबोलाइज, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. योर बॉडी हैज अ डिफरेंट ऑर्गन्स, आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है व्हिच हैज अ कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज द ड्रग. कौन से होते हैं, लिवर होता है आपका, किडनी, स्किन, जीआईटी, ठीक है, आपका लंग्स. सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन योर बॉडी व्हिच हैज अ मेटाबोलाइजिंग कैपेसिटी. ये ड्रग को मेटाबोलाइज करने वाले बहुत सारे ऑर्गन हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर. लीवर को सबसे ज्यादा कैपेसिटी. सो लीवर हैज अ हाईएस्ट कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज द ड्रग्स. सो व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स व्हिच हैज अ कैपेसिटी व्हिच आर इज एबल टू मेटाबोलाइज द ड्रग. तो लीवर है आपका, लीवर हैज अ कैपेसिटी, हाईएस्ट कैपेसिटी. इसको क्या है, हाईएस्ट कैपेसिटी. लीवर हैज अ हाईएस्ट कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज द ड्रग. देन आफ्टर दैट lungs are there, kidney are there, after that intestine is there, placenta is there, adrenal gland is there, and lastly skin. तो स्किन क्या है, स्किन में सबसे कम कैपेसिटी है ड्रग को मेटाबोलाइज करने की. सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसमें है भाई, लीवर में. लीवर हैज अ हाईएस्ट कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज ड्रग. क्वेश्चन इसके ऊपर एज इट इज आया, फॉलोइंग ऑर्गन हैज अ हाईएस्ट कैपेसिटी टू मेटाबोलाइज ड्रग, लीवर. ओके, उसके बाद में लंग्स, उसके बाद में किडनी, ठीक है, इंटेस्टाइन, प्लासेंटा, एड्रेनल ग्लैंड. ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम में भी माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल. क्या होता है मैंने बोल दिया आपको. इफेक्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स, कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ड्रग का क्या क्या होगा. इफेक्ट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द ड्रग, क्या क्या हो सकता है, आउटकम्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट आउटकम्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म होने के बाद में क्या क्या हो सकता है. पहला है इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव ड्रग. पहला क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ, जो एक्टिव ड्रग दिया है पैरास्टामोल आपने, तो उसका क्या होगा, इनएक्टिवेशन होगा. फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकोल इज इनएक्टिवेटेड बाय कॉन्जुगेशन रिएक्शन. तो ये जो ड्रग है क्लोरामफेनिकोल, एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. सो इट इज इनएक्टिवेटेड बाय कॉन्जुगेशन रिएक्शन. ये क्या होता है अपन, सो ये इनएक्टिवेशन हो जाएगा. सेकंड क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एक्टिव ड्रग इनटू एक्टिव प्रोडक्ट. एक्टिवेशन ऑफ एक्टिव ड्रग इनटू एक्टिव प्रोडक्ट. जो एक्टिव ड्रग ऑलरेडी, एक्टिवेशन ऑफ ड्रग टू द एक्टिव प्रोडक्ट. जो ऑलरेडी एक्टिव ड्रग है, एक्टिवेशन ऑफ ड्रग टू द एक्टिव प्रोडक्ट. सो इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, प्रोडक्ट्स आर इनएक्टिव ड्रग, दे नीड्स एक्टिवेशन इन द बॉडी. सो एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, पहला है इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, सो एक्टिवेशन ऑफ प्रोडक्ट व्हिच आर थेराप्यूटिकली यूजफुल, ठीक है, टेलीपैथिकली नहीं, थेराप्यूटिकली यूजफुल. फॉर एग्जांपल लीवोडोपा टू डोपामाइन. लीवोडोपा क्या है, इट इज अ प्रो ड्रग, एंड डोपामाइन क्या है, एक्टिव ड्रग. सो दे आर यूज्ड इन द पार्किंसन डिसीज पीडी. पार्किंसन डिसीज क्या होता है, अपन जब पार्किंसन देख लेंगे पूरा उसमें मैं बोल दूंगा. लेकिन अभी अगर आपको पार्किंसन डिसीज के बारे में चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन, सो यू माइट हैव सीन वन मूवी, बॉलीवुड मूवी है, आपको मालूम नहीं मुझे, आप देखते हो या नहीं देखते. देयर इज वन मूवी नोन एज राजा. एक राजा नाम का मूवी है, बॉलीवुड में आता है आपका. उसमें माधुरी दीक्षित है
उसमें संजय कपूर है, उसमें परेश रावल है। ठीक है, जो परेश रावल होता है संजय कपूर का भाई होता है बड़ा, और उसको क्या है पार्किंसनिज्म है। तो जो परेश रावल का कैरेक्टर है उसमें राजा मूवी में, दैट इज अ दैट इज अ पार्किंसनिज्म। सो उसके हाथ पैर कांपते रहते हैं, ठीक है, वो ठीक से चल नहीं पाता। सो डिसमेनो वहाँ पे एटोनिया, सलाइवेशन, साइलोरिया, सिबोरिया, ओके, improper posture, etc., डिमेंशिया, भूल जाना, these are the symptoms of नो पार्किंसनिज्म। क्यों होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन। अगर डोपामाइन का डेफिशिएंसी अगर हो गया तो पार्किंसनिज्म हो जाएगा। सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस डोपामाइन, दिस इज अ पार्किंसनिज्म। एंड व्हाट इज डोपामाइन? इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। आप बोलेंगे सर हो गया डेफिशिएंसी, इसको दे दो उसको। यू यस, ऑब्वियसली यू आर करेक्ट, यू कैन गिव डोपामाइन, okay, obviously in the Parkinsonism, but dopamine, when you give dopamine orally, so it is destroyed in the GIT। ये क्या होगा? डोपामाइन का डिस्ट्रक्शन होगा, पूरा डिस्ट्रक्शन होगा। अगर कुछ बचा कुछ ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में अगर जाएगा तो वो ब्रेन में जाता नहीं, क्योंकि डिफिशियंसी कहाँ पे होगा डोपामाइन का? ब्रेन में। दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग फ्रॉम पार्किंसनिज्म। दैट्स व्हाई dopamine as such cannot be used, because most of the drug is destroyed in the GID, and if some drug remains, that will not reach to the brain। अगर वो ब्रेन पर तक गया तो वहां पे भी क्या है? एक गेट है, कौन सा? ब्लड ब्रेन बैरियर। सो डोपामाइन विल नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, बिकॉज डोपामाइन एज सच कैनॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। सो दैट्स व्हाई लियोडोपा इज गिवन। लियोडोपा क्या है? इट इज अ प्रोड्रग ऑफ डोपामाइन। ये लियोडोपा जो है, इट इज अ प्रोड्रग ऑफ डोपामाइन, एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इट इज कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन। जो न्यूरॉन्स में ये क्या होता है? लियोडोपा बॉडी में जाएगा और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और ब्रेन में जाएगा, और ब्रेन में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लियोडोपा टू डोपामाइन, एंड नाउ दैट डोपामाइन deficiency will be fulfilled, and that's why it is known as a therapeutically useful activation of इनाप्रिल। इज also a active drug। इनाप्रिल क्या है? एक्टिव ड्रग होता है। इनाप्रिल क्या है? इट इज एक्टिव ड्रग। इसमें यूज होता है, इसको बोलते हैं एस इनिबिटर, इसको बोलते हैं एस इनिबिटर। इट इज यूज्ड इन द हाइपरटेंशन। It is a activated into one metabolite known as inapril। Active toxicological activation जैसे there is one pesticide known as पैराथायोन। पैराथायोन नाम का एक पेस्टिसाइड होता है, ये भी टॉक्सिक है, लेकिन इसके मेटर इसका मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, और एक दूसरा मेटाबॉलिट बनता है, कौन सा? दिस पैराक्सोन which is a more toxic than पैराथायोन। So toxicological activation। नाउ थर्ड इन आउटकम क्या है मेटाबॉलिज्म का? जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट अपन ड्रग, जो आपने ड्रग दिए है उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बन सकता है। सो जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ ए एक्टिव ड्रग। फर्स्ट आउटकम होता है आपका इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, सेकंड आउटकम एक्टिवेशन ऑफ प्रोड्रग, थर्ड आउटकम जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ एक्टिव ड्रग। ठीक है, नाउ दैट एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेशन फ्रॉम एक्टिव ड्रग, that may have similar action with the parent drug, that may have different action than parent drug। अगर जो ऑलरेडी ड्रग दिया है उसका अगर एक्टिव मेटाबॉलिट बनता है तो वो उसका दो चांसेस है, वहाँ पे दो चांस है। तो एक तो उसके जैसे ही एक्शन होगा, या फिर उससे ज़्यादा एक्शन होगा, या फिर उससे डिफरेंट एक्शन होगा। So generation of active metabolite from active drug with the more activity. So for example, diazepam is a sedative hypnotic drug. It is converted into body to one another drug known as oxazepam or another metabolite। इसका मेटाबोलाइट you can say diazepam का मेटाबोलाइट कौन है? oxazepam। Diazepam is converted into one active metabolite known as a oxazepam, which has a is more potent than diazepam। Oxazepam is a more potent or having more active than diazepam। Activation of active drug with different activity जैसे यहाँ पे। So pethidine is a, it is nothing but narcotic analgesic, okay, which is seen as depressant। Now this drug is active already, but after the metabolism it is converted into one another metabolite known as norpethidine, which has a CNS stimulant action। अभी जो ओरिजिनल पेथिडीन है उसका CNS डिप्रेशन एक्शन है, और उसका जो मेटाबोलाइट है उसको CNS stimulant एक्शन है। तो जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट हैविंग other action, right? Metabolism or biotransformation is done by different metabolic reactions in the body। So metabolic reactions in the body, two main reactions, okay? Microsomal enzymes। So microsomal means I have told you, so these enzymes they are of liver origin। Microsomal मतलब क्या? They are present in the microsomes of liver cell।
लिवर का जो सेल्स होता है हिपेटोसाइट्स, so microsomal enzymes means enzymes from the microsomes of hepatocytes, and mostly they are on a smooth endoplasmic reticulum. These enzymes will catalyze the following reactions like oxidation reaction, that is carried out by oxidation reaction is carried out by these two, like cytochrome P450 and flavin monooxidase. Then glucuronide conjugation, enzyme required for glucuronide conjugation, they are also microsomal origin. Enzymes required by enzymes required for reduction and enzymes required for hydrolysis. So all these are the microsomal origin. So non microsomal origin enzymes, so जो भी पेज सेकंड में रिएक्शंस होते हैं उसमें कि मोस्ट ऑफ द तो एक्सेप्ट ग्लूकोयूरिनेशन, मतलब ये पे ग्लूकोयूरिनाइड कॉन्जुगेशन जो होता है वो माइक्रोसोमल एंजाइम की वजह से होता है, और बाकी सल्फेट कॉन्जुगेशन सल्फेट कॉन्जुगेशन जो है या फिर ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन जो है या फिर अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन जो है, so these are the non microsomal. Then again this oxidation reduction hydrolysis, they are also non microsomal. Metabolic reactions, they are metabolism is carried out by enzymes, and enzymes are mostly of two origin. दो origin में कौन सा है, first origin is microsomal enzyme और liver cell origin enzymes, and second is non microsomal enzymes. You can see over here, so you are taking active drug, आप क्या कर रहे हो, active drug लेते हो ना. So you are taking active drug, and after metabolism, what are the different metabolism is biotransformation inside the body. There may be inactivation of drug. Active drug का inactivation हो सकता है. एक outcome, दूसरा outcome क्या है देखो. दूसरा outcome है active drug जो है उसका active metabolite बन सकता है. Active drug will be converted into active metabolite, which either have more potent action, which will have another action, or which will be more toxic. Third outcome, inactive drug will be converted into active drug, that is a prodrugs. पहले क्या होगा, inactive drug मतलब prodrug रहेगा और वो बाद में बॉडी में मेटाबॉलिज्म होके एक्टिव ड्रग बनेगा, सो दैट इज एक्टिव मेटाबोलाइट और प्रोडक्ट. मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, सो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग मींस बायोट्रांसफॉर्मेशन, एंड व्हाट इज द मेन एम, टू कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल इनटू वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल. तो मेन एम होता है कि आपके बॉडी में एब्सॉर्प्शन के लिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग लगता है और एलिमिनेशन के लिए वाटर सोल्यूबल ड्रग लगता है. सो मेन एम ऑफ मेटाबॉलिज्म इज टू कन्वर्ट lipid soluble molecule into water soluble molecule, right? Metabolism of drug, it is carried out in a two phases. Different phase होते हैं. First phase जो होता है, so phase one में कौन से reactions होते हैं? So in the phase one, metabolism is carried out in the different phases, phase one and phase two, right? These phases. So what are the reactions in the phase one? So in the phase one, oxidation, reduction, and hydrolysis. In the phase second known as a conjugation reactions. Phase second reactions, they are known as a conjugation reaction. They are further divided into different types, so I will explain here. Phase one reaction में क्या होगा, oxidation, reduction and hydrolysis. Oxidation, reduction and hydrolysis. तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया. So most common phase one reaction, so remember oxidation is the most common phase one reaction. क्या होता है, oxidation is the most common phase one reaction. मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन फेज वन रिएक्शन होता है. फेज सेकंड में आएगा फेज सेकंड में, इन द फेज सेकंड यू हैव डिफरेंट conjugation reaction. It is also known as a synthetic reaction. Conjugation reaction or synthetic reaction, they are further divided into, for example, glucuronide conjugation. First one is a glucuronide conjugation. So in the phase second you have different synthetic reactions. So first one is a glucuronide conjugation, second one is nothing but the acetylation. Okay, second one is nothing but the acetylation, right? Third one is nothing but the methylation. One is nothing but the methylation. Fourth one is nothing but the, there are different, fourth one is nothing but the sulfate conjugation, glycine conjugation, glutathione conjugation. They are the phase second other reactions. तो देखो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है. सो मोस्ट कॉमन फेज वन रिएक्शन मोस्ट कॉमन कौन सा है, ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज द मोस्ट कॉमन इन द phase 1 reaction. In the phase second, glucuronide conjugation is the most common reaction. In the phase second, glucuronide conjugation. Last year में क्वेश्चन आया था ऐसा, following are the most common phase 1 and phase second reaction respectively. क्वेश्चन ऐसा था, following are the one and phase second, sorry, following are the most common phase 1 and phase second reaction respectively. ऐसा क्वेश्चन था और एक ऑप्शन में था oxidation and glucuronide conjugation. So remember, oxidation is the most common phase 1 reaction. Glucuronide conjugation is a
मोस्ट कॉमन फेज सेकंड रिएक्शन। और एक क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, व्हाट इज द मेन एम ऑफ फेज वन रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन जो होता है उसका काम क्या है। सो व्हाट इज द मेन एम ऑफ फेज वन रिएक्शन। सो रिमेंबर, राइट डाउन, ट्राई टू राइट डाउन, टू इम्पार्ट ए वाटर सोल्यूबल ग्रुप्स। फेज वन रिएक्शन में क्या होगा, पोलर ग्रुप्स है जैसे OH, टू इम्पार्ट ए पोलर ग्रुप्स इनटू द मॉलिक्यूल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेज वन रिएक्शन, टू इम्पार्ट और टू ऐड ए पोलर ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल। ये फेज वन में क्या करेगा रिएक्शंस, ये पोलर ग्रुप्स ऐड करेगा, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फेट ग्रुप, COH ग्रुप, ठीक है, अमाइन ग्रुप, ये पोलर ग्रुप्स को ऐड करेगा। जैसे पोलैरिटी बढ़ाने के लिए पोलर ग्रुप्स ऐड करेगा, सो दैट अगर पोलैरिटी बढ़ गया तो वाटर सॉल्युबल बन जाएगा। टू इंक्रीज द पोलैरिटी, that is the main aim of phase one reaction. Okay, so to impart the polar groups to the molecule is nothing but the main aim of phase one reaction, and most common reaction is the oxidation. What is the aim of phase second reaction? phase second reaction बोलते हैं synthetic reaction और conjugation reaction। ये क्या करेंगे, जो ऑलरेडी वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल है आपकी बॉडी में, उसको उसके साथ में उसका जो मेटाबोलाइट है उसको कॉन्जुगेट करेंगे, लाइक ग्लूकोयोनाइड कॉन्जुगेशन व्हिच इज द मोस्ट कॉमन फेज सेकंड। ओके, एस्टाइलेशन, यहाँ पे एस्टाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा। ओके, एस्टाइलेशन, मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा। सल्फेट कॉन्जुगेशन मतलब सल्फोनिक एसिड के साथ में कॉन्जुगेट। ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन मतलब ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ में कॉन्जुगेट। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ओके, glutathione. So this glutathione conjugation is the main mechanism for removal of paracetamol metabolite. Paracetamol का metabolite जो है, और paracetamol का एक toxic metabolite होता है, that is removed from body by using glutathione reaction. Now acetylation reaction. So it is a phase second reaction, acetylation. Now for this acetylation reaction you need a one enzyme. acetylation के लिए एक enzyme लगता है, acetylase. कौन सा एंजाइम लगता है, एसिटाइलेज, देन मिथाइल। नाउ दिस एंजाइम इज कोडेड बाय वन जीन। ये एंजाइम बनाने के लिए आपके बॉडी में एक जीन रहता है, जीन। ओके, नाउ दैट जीन इज प्रेजेंट डिफरेंटली इन डिफरेंट पीपल, सो दैट व्हाई मल्टीपल जीन्स कंट्रोल्स द n multiple genes control the n acetyl transferase enzyme which are responsible for the acetylation, and that's why हर एक बंदे में अलग अलग कैपेसिटी होगा to metabolize every individual will have different capacity to metabolize the drug by acetylation, and that's why genetic polymorphism. तो क्वेश्चन आ चुका है, genetic polymorphism is related with the following to acetylation. Multiple genes controls the n-acetyl transferase enzyme and the rate of acetylation shows genetic polymorphism. Okay, and subjects depending on that, किसी को ज्यादा acetylation कैपेसिटी रहेगा, किसी को acetylation कैपेसिटी कम रहेगा. So depending on that, okay, subjects are classified into two types: slow acetylators and rapid acetylators. Slow acetylators and rapid acetylators. Slow acetylators मतलब क्या, इनका कैपेसिटी कम होगा. स्लो acetylators. फास्ट acetylator मतलब क्या, रैपिड acetylators, इनका कैपेसिटी ज्यादा होगा. Right now most of the drugs, for example isoniazid is there, sulfonamides are there, so they are metabolized by acetylation reaction, and that's why, so in the slow acetylators you have to decrease the dose of that drug because उनमें metabolism slow होता है उसका. In the rapid acetylators you have to increase the dose because उसमें ज़्यादा metabolism होता है. So that's why. So remember question आ चुका है, genetic polymorphism is related with the following phase of reaction. So acetylation. Right? Other reactions क्या है, methylation, sulfate conjugation, glycine conjugation, glutathione conjugation. They are the other reactions. Right? एक बार एक इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था. In the metabolism of atracurium. Atracurium ये जो ड्रग है, it is a neuromuscular blocker. Atracurium. Skeletal muscle relaxant होता है. So in that metabolism there is one reaction that is named Hoffman elimination. आपका जो ड्रग है तो पहले तो फेज वन मेटाबॉलिज्म होगा उसका, उसमें कुछ पोलर ग्रुप्स ऐड किए जाएंगे कि अगर मॉलिक्यूल पोलर नहीं बनता है, अगर पोलर बन गया फर्स्ट फेज में, सो योर ड्रग विल बी मेटाबोलाइज्ड बाय फेज वन रिएक्शन. फर्स्ट ऑन द मॉलिक्यूल polar groups will be added. If it becomes polar it will be excreted. Now if it does not become polar, it will undergo phase second metabolism, and again that is means conjugation. यहाँ पे ये पोलर ग्रुप, ये पोलर मॉलिक्यूल जो है बॉडी का,
जैसे ग्लूटाथायोन ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लूटाथायोन ग्लाइसिन या ग्लूकोनाइड, so it will be combined with your metabolite and it will be eliminated, right? Now there are certain drugs which are eliminated directly by phase second metabolism. कुछ ड्रग है कि डायरेक्टली phase second metabolism होगा उसका और ये eliminate हो जाएगा. There are certain drugs, अभी बोलो, there are certain drugs which are there are certain drugs which are eliminated. There are certain drugs which are eliminated as such. इसको बोलेंगे unchanged. There are certain drugs which are removed from your body unchanged. उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वो जैसे अंदर गए वैसे ही बाहर निकले. किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है फेज 1 में, किसी का फेज 2 में होता है, या किसी का फेज 1 में होने के बाद में फेज 2 में होता है. This is the overall summary of your metabolism. Most of the drugs are metabolized by microsomal enzymes known as a CYP. कौन सा? CYP 450. P450. CYP 450. ये वो CYP 450. So most of the drugs are metabolized by CYP 450 enzymes, right? And there is a, because these enzymes they are named CYP, मतलब cytochrome P450 enzymes. CYP मतलब cytochrome P450. So they are liver origin enzymes and P450 को बोलते हैं because they absorb the UV light at a 450 नैनोमीटर. इनको CYP 450 क्यों बोलते हैं कि लाइट एब्सॉर्ब करता है यूवी लाइट कहाँ पे 450 nanometers में. So that's why CYP 450. So they are having different, there are a lot of isoenzymes of CYP family. CYP family में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे आपके फैमिली में होता है बहुत सारे मेंबर्स हैं. ओके, सो यहाँ पे कुछ इथनिक वेरिएशंस दिए हैं. सो इथनिक वेरिएशंस इन द एन एसिटिल एन एस्टाइलेशन ऑफ आइसोनियाजाइड. अभी दुनिया में आप ही थोड़ी हो, दुनिया में बहुत सारे पीपल है. अमेरिका में कौन से वाइट पीपल है, ठीक है. यूएसए में वाइट भी है और ब्लैक भी है. लैटिन अमेरिकन अलग है, कुछ अमेरिकन इंडियंस है वो अलग है, जापानीज है, स्किमोज है, ओरिएंटल्स है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीन्स रेसेस है, रेसेस, ह्यूमन रेसेस, ठीक है. तो हर एक का मेटाबॉलिज्म का कैपेसिटी अलग अलग होता है, particularly phase second metabolism acetylation. So ethnic group slow acetylation fast. So in the whites of USA and Canada, जो गोरे लोग होते हैं कनाडा के whites, ये कनाडा के एंड यूएसए के, दे आर 45% स्लो acetylation. मतलब अगर यहाँ पे पॉपुलेशन कंसिडर करो 100%, तो आउट ऑफ दैट 100% 40% are slow accelerators, 55% are rapid accelerators. In the black people यूएसए के जो ब्लैक है उसमें 48% स्लो accelerators है and 52% rapid accelerators. Latin Americans, in that you have 67% slow accelerators and 33% rapid accelerators. In the American Indians, 79% slow accelerators and 21% rapid. In the Japanese, 87% slow accelerators, 13% rapid accelerators. In the Eskimos, रशिया में जो होते हैं Eskimos, so 95% slow accelerators and 5% rapid accelerator. Orientalis जो होता है Orientalis, 100% people are rapid accelerators. ठीक है, अभी बोलेंगे सर ये क्यों देखना है, you have to understand this. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको आइसोनियाजाइड ड्रग टीबी के लिए यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है, स्कीमोज में यूज करना है. तो यहाँ पे 95% पीपल क्या है, स्लो एस्टाइलेट है. क्या है, स्लो एस्टाइलेट. ऑब्वियसली यहाँ पे डोज क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिक्रीज द डोज बिकॉज ये स्लो मेटाबलाइज करेंगे ड्रग को. तो यू हैव टू डिक्रीज डोज इन द स्कीमोज. वही अगर आपके ओरिएंटलिस पीपल है तो वो क्या है 100% रैपिड एस्टाइलेट. सो इन दैट केस अगर आपको आइसोनियाजाइड देना है so you have to increase the dose because ये क्या करेंगे, फटाफट मेटाबलाइज करेंगे. In the rapid accelerators you have to increase the dose, in the slow accelerators you have to decrease the dose. Is that clear? So examples of metabolic reactions and their respective drugs undergoing the biotransformation. तो पहला phase 1 reaction is known as a non-synthetic reaction, that you have oxidation. So phenytoin and diazepam, ibuprofen, amphetamine, chlorpromazine, dapsone, these are the examples of drugs which undergo oxidation reaction.
इनका ऑक्सीडेशन होगा ये ड्रग का, ठीक है। रिडक्शन वो हैलोथेन क्लोरोम्फेनिकॉल दे विल अंडरगो रिडक्शन, तो पेथिडीन प्रोकेन का हाइड्रोलिसिस होगा। सो मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक का हाइड्रोलिसिस होता है। नाउ लेट्स कम टू द फिर सेकंड रिएक्शन, conjugation reaction. So for chloramphenicol and morphine, they are eliminated by glucuronide conjugation. So morphine का एक एक्टिव मेटाबोलाइट होता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोयूरिनाइड, सॉरी इसका कॉन्जुगेशन होता है मॉर्फिन 6 ग्लूकोयूरिनिक एसिड। आइसोनियाजाइड सल्फोनामाइड्स दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय acetylation reaction. Adenine histamine they are metabolized by methylation reaction, and paracetamol is eliminated by glutathione reaction. इसके ऊपर आ चुका है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय CYP3A4/5। जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होता है उसमें बहुत सारे आइसोटाइप्स होते हैं, लाइकवाइज दिस माइक्रोसोमल एंजाइम्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द मेटाबॉलिज्म। तो CYP450 ये P450 क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये एंजाइम यूवी में 450 नैनोमीटर को एब्सॉर्ब करता है। सो इन दैट यू हैव डिफरेंट आइसो एंजाइम्स लाइक CYP3A4/5. So it has a 36% contribution in the metabolism. अगर 100% मेटाबॉलिज्म कंसीडर करेंगे तो अकेला CYP3A4/5 36% मेटाबॉलिज्म करेगा। CYP2D6 it will metabolize 19%, and CYP2C9/9 16%, CYP1A2 11%, then CYP2C19 8%, then CYP2E1 4%, then CYP2A6 3%, lastly CYP2B6 3%. सो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा मेटाबोलाइज करने वाला कौन है, CYP3A/4/5, CYP3A4/5 it will metabolize 36% of drug, and that's why it was a question in GPAT 2019. Most of the drugs are metabolized by CYP3A4/5. It is not always a case, ये हर बार नहीं होता, but most of the drugs they are metabolized by this enzyme. They has a different iso enzymes. ये एक क्वेश्चन आ चुका है इसलिए याद रखो। Now enzyme inducer, enzyme inhibitor.